এবাৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আপুনি বাৰু চৰকাৰী ঘৰ এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই নেকি আপোনাৰ ঘৰটো পকী ঘৰ নহয় নেকি তেনেহলে এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কাৰণ নাই অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰে ঘৰ পকী হ'ব অসমত কোটো জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব অসমত কোটো কেঁচা ঘৰ নাথাকিব অসমৰ আটাইবোৰ মানুহৰে ঘৰ পকী ঘৰ হ'ব যদিহে আপোনাৰ পকী ঘৰ নাই যদি আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰা নাই তেনেহলে এই খবৰ আপোনাৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ এখন ফটো তুলি মন দি শুনিব কেৱল মাত্ৰ এখন ফটো তুলি আৰু আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰিলে পাব আপুনি সৰকাৰি ঘৰ পুনৰবাৰ কৈছো কেৱল মাত্ৰ এখন ফটো আৰু আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব একোটাকৈ সৰকাৰি ঘৰ এই মুহূৰ্তৰে ডাঙৰ খবৰ লৈছো এখন ফটো তুলি আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰিলে পাব সৰকাৰি ঘৰ এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মোদী চৰকাৰে অসমত নাথাকিব এটাও জুপুৰি ঘৰ অসমৰ কোনো প্ৰান্ততে এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব সকলো মানুহৰে ঘৰ পকা হ'ব পকী ঘৰ হ'ব সকলো মানুহৰে অসমৰ প্ৰত্যেকজন লোকৰে ঘৰ পকী হ'ব অসমত কোনো ধৰণৰ আৰু কেঁচা ঘৰ নাথাকিব ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকলৈ এই ভাল খবৰ যিসকলে সৰকাৰি ঘৰ পোৱা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এই খবৰ আপুনি সৰকাৰি ঘৰ পোৱা নাই নেকি আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰা নাই নেকি তেনেহলে এতিয়া আৰু চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই হাজু হক সৰকাৰি ঘৰ লবলৈ সকলো দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব একোটাকৈ সৰকাৰি ঘৰ প্ৰতিজন দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ পাবলৈ এতিয়া আৰু সহজ হৈ পৰিব দুচকীয়া বাহন যদি আপোনাৰ ঘৰত আছে তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব পূৰ্বতে বাহন থাকিলে সৰকাৰি ঘৰ পোৱা নাছিল এতিয়া দুচকীয়া বাহন থাকিলেও সৰকাৰি ঘৰ পাব অসমৰ লাখ লাখ জনতাক এই ভাল খবৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে হেহতিয়াকৈ 50,000 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিলে সৰকাৰি ঘৰ এতিয়ালৈকে অসমত 20 লাখতকৈও অধিক লোকে লাভ কৰিছে সৰকাৰি ঘৰ এখন ফটো তুলি আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰিলে আপুনি লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ অসমত এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব প্ৰত্যেকজন মানুহৰে ঘৰ পকী হ'ব এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব অসমৰ প্ৰতিজন মানুহৰ ঘৰ পকী ঘৰ হ'বলৈ গৈ আছে কেনেদৰে আপুনি পকী ঘৰ লাভ কৰিব হেয়া ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে আপুনি যদি হে দুচকীয়া বাহন আছে আপোনাৰ ঘৰত তেনেহলে তেতিয়াও আপুনি পকী ঘৰ লাভ কৰিব অৰ্থাৎ সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ যদি মাহিলী উপাৰ্জন 15,000 টকা তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ যদি হে 5 একৰ মাটি আছে তেতিয়াও আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব হাজু হৈ আছে 3 কোটি সৰকাৰি ঘৰ আপোনাৰ এখন মাত্ৰ ফটো আৰু আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো সাবমিট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পৰ্টেলত গৈ আবেদন কৰক ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰক সকলো তথ্য পাতি সাবমিট কৰক আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ একোটাকৈ সৰকাৰি ঘৰ আপুনি লাভ কৰিব অসমৰ লাখ লাখ জনতাক এই ভাল খবৰ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে হেহতিয়াকৈ 50,000 হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিছে নতুনকৈ সৰকাৰি ঘৰ আৰু এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ অসমতে 20 লাখতকৈ অধিক লোকে লাভ কৰিছে সৰকাৰি ঘৰ আনহাতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা কৰা হৈছে যে অসমত এটাও সৰকাৰি ঘৰ সকলোৰে ঘৰ সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব সকলো মানুহে এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব এটাও জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব হে স্পষ্ট ৰূপত ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰে ঘৰ পকী ঘৰ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপুনি যদিহে এতিয়াও সৰকাৰি ঘৰ পোৱা নাই আপুনি যদিহে এতিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ পোৱা নাই তেনেহলে পলম নকৰিব এখন মাত্ৰ আপোনাৰ ফটো আৰু আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰক তাৰ পিছতে আপুনি সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰিব যিসকলে সৰকাৰি ঘৰ লাভ কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ সকলো দৰিদ্ৰ লোকে লাভ কৰিব সৰকাৰি ঘৰ অসমত নোহোৱা হ'ব এটাও কেঁচা ঘৰ সৰকাৰি ঘৰ সকলোৱে লাভ কৰিব এতিয়া আৰু সহজ হৈ পৰিব
চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰাটো মাত্ৰ এখন ফটো তুলি আধাৰ নম্বৰ সংযোগ কৰিলে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো যে শেহতীয়াকৈ 50,000 হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে অসমত 20 লাখতকৈ অধিক লোকে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি এখন মাত্ৰ ফটো তোলক আৰু আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ যদি আছে তেনেহলে আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো সাবমিট কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পোৰ্টেলত যাওক, তাত গৈ আবেদন কৰক আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফটো আপলোড কৰক। সকলো তথ্য পাতি যিসমূহ তথ্য আপোনাৰ পৰা বিচাৰে সেইসমূহ তথ্য পাতি আপুনি সাবমিট কৰক আৰু তাৰ পাছতে আপুনি অতি সহজে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। সাজু হৈ আছে 3 কোটি চৰকাৰী ঘৰ। দেশৰ আৰু 3 কোটি জনতাই চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। আপোনাৰ যদিহে 5 একৰ মাটি আছে তেতিয়াও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। আপুনি যদি মাহিলী উপাৰ্জন 15,000 টকা, আপোনাৰ প্ৰত্যেক মাহৰ উপাৰ্জন 15,000 টকা, তেতিয়াও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। আপোনাৰ যদিহে দুচকীয়া বাহন আছে ঘৰত তেতিয়াও আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মোদী চৰকাৰে। সমান্তৰালকৈ আজি অসমত উপস্থিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত ঘোষণা কৰা হৈছে যে অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব, জুপুৰি ঘৰ নাথাকিব। অসমৰ প্ৰত্যেকজন দৰিদ্ৰ লোকে একোটাকৈ পকী ঘৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। আকৌ 3 লাখতকৈ অধিক লোকে পাব বিনামূলীয়া চৰকাৰী পকী ঘৰ। 3,88,000 নতুন PMAY গৃহ নিৰ্মাণত অনুমোদন প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা আৰু 2025 বৰ্ষতে 3 লাখতকৈ অধিক চৰকাৰী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমত। আপোনাৰ নামো আহিব পাৰে এইবাৰ। আপুনি খৰটকীয়া কৰক, খৰটকীয়াকৈ আপুনি আবেদন কৰক পোৰ্টেলৰ মাধ্যমত, ফটো সাবমিট কৰক, সমান্তৰালকৈ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ সংযোগ কৰক। তাৰ পিছতে যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি আপোনাৰ পৰা বিচাৰিব সেইসমূহ তথ্য পাতি আপুনি জমা দিয়ক আৰু ইয়াৰ পিছতে আপুনি অতি সহজে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব। 3 লাখতকৈ অধিক লোকে এইবাৰ বিনামূলীয়া চৰকাৰী পকী ঘৰ লাভ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে। 3,88,000 নতুন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ নিৰ্মাণত অনুমোদন জনাইছে মোদী চৰকাৰে আৰু 2025 বৰ্ষতে 3 লাখতকৈ অৰ্থাৎ এই বছৰতে 3 লাখতকৈ অধিক চৰকাৰী ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব অসমত। আধাৰ কাৰ্ড থকা লোকেহে আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে। কেঁচা ঘৰ থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে নিজে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অতি সহজে লাভ কৰিব চৰকাৰী ঘৰ। এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ ভাষ্য আমাৰ লগত আছে নিজৰ ভাষণত। কি কৈছে অসমত উপস্থিত হৈ মন দি শুনক। मंत्री बनने के बाद मामा भी पहली बार असम में आया है। हेमंत दा ने कहा अभी कि ये मकान तो बन गए 20 लाख, लेकिन जरूरत अभी और भी है। आप बताओ बहनों और भाइयों, हर गरीब का पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो दादा कह रहे हैं अभी तो आवास प्लस की सूची में से ही कुछ बचे हैं। दादा जो बन गया अब उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने जो बताया और मैंने जानकारी ली, उस जानकारी के हिसाब से अभी 7,76,000 मकान, 7,76,000 मकान उस सूची में से और बनना है। और इसलिए आज ही 3,88,000 मकान तत्काल हम स्वीकृत कर रहे हैं असम के गरीबों के लिए। मेरे अधिकारी यहां बैठे और ये कह के नहीं करूंगा, दादा भी आपको चिट्ठी भी देने वाला हूं, क्योंकि आपने पहले ही कह दी थी कि आओ तो कुछ लेके आना, तो लेके आया हूं। और 3,88,000 नहीं दादा, 3,88,000 अभी इसी वित्तीय वर्ष में, अगले महीने किस्त जारी कर सकते हैं आप, और उसके बाद अप्रैल के महीने में अगला वित्तीय वर्ष शुरू होते ही 3,88,000 और देके सूची को पूरा कर दिया जाएगा। आवास प्लस की सूची से एक भी लाभार्थी वंचित नहीं रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यह चमत्कार होगा। इतने मकान एक साथ कभी नहीं बने। और इतना और बताता हूं कि इन दोनों में पैसा कितना लगेगा। आज जो मकान हम देंगे,
जो मैंने घोषित किया है उसमें 9,726 करोड़ रुपए की कुल राशि लगेगी, दोनों मिला के आज के। और जो मैंने अनाउंस किया अगले वित्तीय वर्ष के 16,159 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गरीबों के मकान बनाने के लिए। और दादा इसमें से 90% केंद्र सरकार का, 10% आपका, थोड़ा हमारा थोड़ा तुम्हारा, गरीबों का घर बन जाएगा, उनकी जिंदगी सफल और सार्थक हो जाएगी। लेकिन दादा यहीं तक नहीं रुके, उन्हें कहा भी तो कई रह गए, सर्वे में नाम छूट गए। तो मेरे बहनों और भाइयों, आप भी ध्यान से सुनना और बाकी को सुना भी देना कि जो मकान बचे हैं प्रधानमंत्री जी ने तय कर लिया है। सरकार बनते ही तीसरी बार उन्होंने ये तय किया था कि गरीबों के लिए 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में। तो जो छूट गए, बताओ भी छूट गए कि नहीं? कई लोग छूटे हैं कि नहीं? कई लोग छूटे हैं। तो अब जो छूटे हैं वो भी नहीं छूटेंगे। अब नया सर्वे शुरू किया जा रहा है, फिर से जो छूट गए हैं उनका नाम जोड़ने के लिए नया सर्वे। और नए सर्वे में भी 3 संशोधन किए। दादा 3 संशोधन किए हमने, रणजीत जी भी सुन रहे हैं। नंबर 1, यहां लखपति दीदी अभियान चल रहा है। पहले पीएम आवास योजना में यह तय कर दिया था कि 10,000 रुपया हर महीने से ज्यादा जिसकी आमदनी होगी उसको मकान की पात्रता नहीं रहेगी। अब 10,000 रुपया तो हमारी लखपति दीदियां ऐसे ही कमा लेती है। अगर इसी सीमा को मान लिया तो ये तो मकान की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और इसलिए तय किया कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपए तक भी हर महीना कमाए तो भी मकान उनको दिए जाएंगे, सर्वे में उनका नाम जोड़ा जाएगा। एक बात और थी पुराने सर्वे में कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल 2 व्हीलर अगर है तो उसको मकान नहीं दिया जाएगा। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। गरीब भी मजदूरी करने जाता है तो आजकल तो मोटरसाइकिल पर बैठ के ही जाता है, तो 2 व्हीलर में तो कई बाहर हो जाएंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है कि 2 व्हीलर जिसके पास होंगे उसको भी मकान दिया जाएगा। और तीसरी चीज, और छोटे छोटे किसानों ने क्या, उनका क्या दोष है? 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन वाले और 5 एकड़ तक अनएरिगेटेड असिंचित जमीन वाले जो किसान हैं उनको भी घर दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे किसानों को भी घर मिल सके। अब ये 3 शर्तें और हटा के अब हम सर्वे करेंगे। लेकिन दादा सही सही बोलते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बार नीचे जो सर्वे करने टीम जाती है वो ही गड़बड़ कर देती है। अब ये गड़बड़ बिल्कुल निर्मूल होनी चाहिए और उसके लिए 2 काम हम कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो। लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कहीं के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा। कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे। और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए।
कि कोई जानकारी गलत तो नहीं है, विभाग अपनी तसल्ली कर लेगा। लेकिन बहनें भी जाएंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि बहन कभी गलत काम नहीं करती, जो सच होता है उसी को सच बताती है। इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इस काम में लगाया जाएगा। तो मुझे लगता है फिर सर्वे की सूची से कोई नाम नहीं छूटेगा, जब खुद ही सर्वे करना है। নতুন प्रधानमंत्री आवास गृहर अनुमोदन करे। मैं আজি मंत्री डांगरिया कब खोजो जे हमारे प्रदेश में आपने अब तक हमें 20,91,887 प्रधानमंत्री आवास गृह का स्वीकृति दिए थे और हमने 19,57,777 गृह का अभी तक काम कंप्लीट किया हूं और थोड़ी ही आवास हमारे करने में बाकी है। लेकिन हमने जो जियो टैग किए थे, वो जियो टैगिंग का बाद हमारे पास 8 लाख बेनिफिशियरी का नाम है, जिसको अभी हम आवास देने में असमर्थ है। लेकिन थोड़ी ही दिन पहले आपने 1,71,000 नया आवास का स्वीकृति दिए थे और लगभग और आगे जाके अगर मुझे 6 लाख घर मिल जाता हूं तो पहला चरण में जितना आवास का जियो टैगिंग हुए थे সকলোৱে একোটাকৈ ঘৰ পাই যাব। অৰ্থাৎ আজি আমাৰ অসমৰ কাৰণে আৰু যদি আমি 6 লাখ ঘৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে যিসকলে জিঅ' টেগিং কৰি থৈ দিছিলে সকলোৱে ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। मैं शिवराज सिंह चौहान जी आज हमारे बीच में उपस्थित है। मैं असम वासियों का ओर से आपको यही निवेदन